Namaskar and good morning to all the viewers and listeners to this program. This is a special induction program for the learners of the online programs, those who have taken admission to about 34 programs. There are 34 programs of study which are on offer as of now online. And this program is basically for the learners of the Regional Center Delhi 3. Regional Center Delhi 3 has a total strength of approximately around 1,200 learners for 8 programs which are online. Uh, Includes Bachelor of Library and Information Sciences, Bachelor of Tourism Studies, Certificate Program in Library and Information Sciences, Certificate in Tourism Studies, Diploma in Tourism Studies, a Masters in Journalism and Mass Communication, Masters in Translation Studies, and MA English. MA English, of course, has the highest number of the learners, those who have taken admission. So I welcome to all the newly admitted learners, those who have taken to these programs of study through Regional Center Delhi 3. Of course, the admission process was initiated by the Center for Online Learning, which is located at the new headquarters. But subsequently, it was decided that the academic support would be provided through the regional centers. So, to begin with, 4 regional centers of Delhi NCR, that is Delhi 1, Delhi 2, Delhi 3, and Noida, they have been allocated select programs in each of the region, and all the learners of that program, online program, have been attached and allocated to that regional center. So for Regional Center Delhi 3, these are the 8 programs which I just mentioned. So they will be provided academic support and all type of academic plus other procedure related support which is required to be done in order to ensure that the learners are facilitated in the best possible manner and they are able to complete their program of study in the best possible manner. So with these words, I welcome all the newly admitted learners, and of course, I'll be giving a brief of what Indira Gandhi National Open University is all about, what is the ODL system, and what way we have been providing support to the learners online. And these being online programs, everything would be done online right from the initial stage itself, that is at the time when they have taken admission to the program of study of their choice to which they are enrolled, and subsequently the conduct of the counseling session, or what we call as the teaching sessions, then the assignment submission, wherever projects are involved, the project guidance and other support related matters, all those things would be done exclusively online. Even the study material has been provided in the digitized format to all the newly admitted learners, and it will help them to understand and grasp. And I'm sure that with this initiation, particularly the initiative taken by the respective learners, they'll be able to achieve their long cherished dream and desire to improve their academic qualification, their professional competencies, and their skills. So, with these few words, once again, I welcome to all of you. I initiate by giving a brief account of the Indira Gandhi National Open University to all, so that the newly admitted learners, those who have taken admission, they are aware as to what way the university functions and what are the various ways through which the academic support would be provided to the learners, whether it is online or through ODL mode, that is open and distance learning mode, remains the same, except for the fact that during the last 2 years, the ICT intervention through various e-platforms has substantially increased. And this has helped us to reach out to the large segment of population in vast areas. And I'm happy to share that many of the learners, those who have taken admission to these programs of study, they are not only confined to the national boundaries, that is within the country, but also learners have been admitted from as far as countries like United States of America, Singapore, Malaysia, Nepal,
some of the Middle Eastern countries. So we have learners from all places, and of course, I feel that many of the learners, as per their time zone and time schedule, they must be present and they must be attending this program, which is going on Facebook Live. Because of the large number which we have, obviously we couldn't have invited all of them through this Google Meet. So this session is going online live through Facebook as well. So whatever issues are there, my colleagues, Dr. Ekta Sharma, they are here. Dr. M.R. Fazal is here. So they'll be responding to your queries which come up in the form of the various messages on the Facebook, and you can always get it resolved. Even if it is not resolved immediately, do not get little panicky about it. Just have some patience, and all the queries of the learners would be resolved in due course of time. So I begin by informing you about the IGNOU in general and about the ODL system in particular and the way in which we offer the program. Indira Gandhi National Open University was established by an act of parliament, and the Open University was conceived. It was established in the year 1985, and the university was conceived as an innovative and sensitive promoter in a lifelong learning process in a fast-changing and developing society like ours. And during the last almost about 35 years of operations, we started our first offering in the year 1987, even though the university was established in the year 1985. The first offering was initiated in the year 1987. Two programs, both of them were diploma program. One was diploma in distance education. The other one was diploma in management. So with two programs and about 4,000 odd learners, those who were enrolled to these programs. This university, which was conceived to be an innovative and a sensitive promoter of a lifelong learning in a fast-changing society like us, has emerged as a single largest university system in the world, with a cumulative student strength of more than 34 lakhs, 3.4 million students spread across 281 programs of study, ranging from awareness level, certificate level, diploma, postgraduate diploma, masters, bachelors, going up to the level of the PhD. And these programs of study are designed and developed by 21 schools of study. 21 schools of study. The programs, particularly the ones which we are talking about, they are mainly offered through School of Social Sciences, School of Humanities, School of Tourism Studies, and of course, School of Journalism. They are basically confined to these schools. And the support is provided through a vast network of about 67 regional centers. Delhi 3 is one amongst them. And out of these 67 regional centers, 11 regional centers are located in exclusively defense areas, meant exclusively for the defense personnel, Indian Army, Air Force, paramilitary forces. So 11 regional centers are functioning exclusively for them, and we are trying to provide academic support to all such learners. The changing times, which has brought about significant change and the kind of a paradigm shift that has taken place in the usage of the technology for providing academic support to the learners, has not been new to the IGNOU system. Right from the initial stages, technological interventions were an integral part of the program offering, though at that time the digital platform was not used as extensively as it is being used now. But even at that time also, in the initial stages, the university was providing academic support by making use of ICT tools like audio cassettes and video cassettes. Subsequently, CDs, CD-ROMs were being used. And then the broadcast media was also being extensively utilized. So
all these things have been there right from very beginning. Of course, yes, the use of the various electronic platforms has substantially increased during the last couple of years. So much so that beginning from 2016, when very few institutions in the country were offering online program admissions and of course submission of the examination form, IGNOU was one such premier institution which started these activities as early as in the year 2015 and 16 itself. So all the admission process as of now is 100% online. There's nothing which we call as the offline. And we are able to have this in the best possible manner just to ensure that the academic support to the learners is the best and second to none. So these are some of the unique specialities. And of course, as I've said, that the hallmark of the university has been to provide high quality education through open and distance learning mode. And over the years, IGNOU has been effectively and successfully harnessing the emerging dimensions of the information and communication technology and has successfully integrated them in program delivery and also in enhancing the reach. The very fact that the number is consistently increasing, this is one institutional mechanism where the admission figures have never fallen down. They have consistently been on the rise and it is consistently increasing. The ways and means of imparting education, the methodology of imparting education, of course, I'll be giving a brief about it in due course. But I would also like to inform that university is committed to re-energize not only the ODL system, integrating the ICT to expand the higher education and ensuring quality, equity, inclusion and affordability, but it is also effectively utilizing them. And the reason and the outcome of such re-energizing initiatives have been that the year 2021 saw that IGNOU became the first open university system in the country to get accredited with A++ grade by NAAC, National Assessment and Accreditation Council. And the university also obtained first rank among the institutes of national importance, comprising of central universities and centrally funding institutions, particularly in the non-technical category, which was conducted by Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements, a path-breaking initiative of the Ministry of Education. And there also, I reiterate, IGNOU got the first rank. Now, these are certain accomplishments which we have been able to achieve during the last 1 year. And of course, there have been many other accomplishments as early as in the year 1993. The IGNOU was recognized as Center of Excellence for its excellent programs and of course the study material by none other than Commonwealth of Learning, a Canada-based institution which instituted this award. And this was again repeated in the year 1997. The study material which is being provided to the learners, even today, they happen to be one of the best study material which is being effectively utilized not only by the learners of the IGNOU, but all across different programs of study being offered by different institutions, different universities. They have been recommending, referring to, and following the IGNOU study material. So with these words, of course, I come to the teaching learning methodology of imparting education to the learners. The teaching learning methodology at IGNOU is distinct and different from the conventional mode. And just as the learners, those who have taken admission in online mode, they are aware that all the academic support to them would be provided 100% online, be it related to the providing the digitized format of the study material, the conduct of the teaching, what we call as the academic counseling session in our system, the submission of the assignment, the assessment of the students through the assignment submission, their dissertation, the project, depending upon the
type of the program. Not all the program will have project, not all the program will have dissertation. Select programs will have it, and that you'll get to know when you go through the program guide. And I'm sure that many of you must have gone through it. The kind of the program which we have, of course, only one or two program has this component, so they have to accordingly follow it. And another important point which is to be taken note of is that wherever practicals are required, even they will also be conducted online. So this online conduct of the program, the delivery of the program, is done exclusively the way in which it is being done for the ODL system, except for the fact that online platform would be used extensively to provide the support to our learners. And whatever we do, please remember one thing, that IGNOU follows a learner-centric approach, an approach through which only the learners, they are the at our focus, the focal point, and we try to revolve all activities around them so that they are able to get the best possible support, whether it is from the core faculty within the institution or else the faculty members drawn from the different institutions spread across the country, which numbers more than 2,140 as on date. And the teachers who are teaching there, whether it is a regular college, regular university department, engineering college, medical colleges, or other institutions of higher learning, the faculty members, the teachers, the professors, those who are teaching there, they are the same professors who will also be teaching our IGNOU learners. And the only difference would be that most of these online counseling or even otherwise the academic support would be provided during the weekends. We'll try to extend it over a period of time, but most of it particularly would be held on weekends. So you have to keep this in mind, and you are, if you are clear about it, I'm sure many of your problems will automatically get resolved. There will be a set schedule about which I'll be talking to you in the form of the counseling schedule, just as we have a timetable in the conventional mode of teaching in the institutions of higher learning. We call that as a counseling schedule. Your classes would be fixed in number. They will all be online, and the teacher would be interacting with you, addressing you as a learner, as a collective mass of the student in online mode, and providing you the academic support and guidance on various subject related matters. There's one more point which you must understand, that we do not use the term teaching. We use the term as academic counseling. Academic counseling is what? It is a combination of the subject related support and guidance, what we call as the tutoring, when the teacher addresses a collective mass of students, not necessarily in a face-to-face mode, but also in online mode. And he or she communicates to the students, which implies that the communication flows mostly from the teacher to the taught. This is what is tutoring. But the students at times, they are faced with different other constraints and difficulties. So they try to, seek resolution on various matters. So providing guidance to them on various routine matters. It could be administrative matter, it could be procedure related matter, it could be matter pertaining to the time schedule of the university about the program offerings. All those guidance will also be provided by the academic counselors. So that becomes a kind of a general counseling, general advice which is being given. And the combination of the two we call as the academic counseling. Tutoring and general counseling taken together becomes the academic counseling, which is conducted for specified time, for specified duration, and of course, the schedule of which would be uploaded on the website of the university, and you will be able to see that and should try to follow it up. I'm not too sure as to how many of you will be able to follow this in terms of
the way in which I've been communicating. So I'll try to make it bilingual as well. हिंदी में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जितने भी छात्र हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए, वो चीजों को भली भांति और अच्छे से समझ जाएं, जिससे कि किसी प्रकार का कोई संशय, किसी प्रकार की कोई परेशानी उनके दिमाग में ना रहे। लेकिन ये बात जरूर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, और बार बार इसको दोहराऊंगा, कि ये जिस कार्यक्रम में भी आपने प्रवेश लिया है, आपकी अपनी जिम्मेदारी वो सबसे ज्यादा है। हम लोग आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम लोग आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो आपको काउंसिल करेंगे, आपको ट्यूटरिंग करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल जो मिला है डिजिटाइज फॉर्मेट का, और जो अगर नहीं मिला है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ई ज्ञान कोश के लिंक पे। तो वो भी अच्छे से बेहतरीन टीचर्स द्वारा लिखा गया है, और कंटेंट ऐसा है जो कि बहुत अच्छे से समझने वाला और अच्छे से वो करने वाला है। इसके बारे में थोड़ी देर में मैं चर्चा करूंगा। और किसी विशेष व्यवधान के बिना आप अपनी शिक्षा बहुत आराम से जारी रख सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो इतना बड़ा ये जो हमारा यूनिवर्सिटी सेटअप है, जो इतने कम समय में इतने अधिक ऊंचाइयों को छू रहा है, इतने बुलंदियों को छू रहा है, उसका केवल और केवल एक कारण यह है कि हम लोग इस प्रकार से अपने कार्यक्रमों का संचालन करते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को कम से कम परेशानी हो। चाहे वो कन्वेंशनल मोड हो, चाहे वो ओडीएल मोड हो, चाहे ऑनलाइन मोड हो, प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर। Do not get distracted by the problems. Try to focus on the main issue in terms of what way we are managing the activities. And again, I reiterate that the major responsibility lies on you as a learner when it comes to the discharge of your academic responsibility. So with these words, of course, I'll give a brief account of the teaching learning methodology which is followed at Indira Gandhi National Open University. The teaching learning methodology, what we make use of is multiple media. That means we make use of more than one media. But because our learners of this online program, they are exclusively online, so their major support would be done online. Of course, it could always be supplemented and complemented by various other media in the form of the technology, in the form of the broadcast, in the form of the telecast, in the form of the other technology-related support. But it will be mainly resting on the technological intervention to provide support to you. So first media which we talk about is the study material. Every student, whether it is an ODL student or an online student, is provided a set of study material, what we call as different blocks. Just as you please try to understand one basic concept: the program of study to which you are enrolled, whether it is Masters in English or Masters in Journalism and Mass Communication or Bachelor of Library and Information Sciences, the certificate program in Library and Information Sciences, or Bachelor of Tourism Studies. These are the same programs which are being offered by the university through the ODL mode. The same program is also being offered in online mode as well. The difference is that for the ODL students, of course, we provide them support at times in face-to-face mode as well, at times in the form of the hard copy of the study material or the printed material. And of course, many of the activities could be conducted offline, just as they have started opening up because of the initiatives of the government of India, that institutions have started opening up. And so we are also following the same thing. But to the online learning, irrespective of the fact that institutions open up or they work online, we will continue to offer you support through online mode. The study material which has been provided to you,
you should try to understand that is based in the form of the various basic concepts what we normally make use of in the open and distance education system. Please remember the program to which you are enrolled, which in common parlance is used as a course in the conventional system. Just as you have taken admission in MA English, if we talk it out for a university system, whether it is a Delhi University or any other university, it could be Mumbai University, it could be Patna University, it could be Allahabad University, any other university, there they call this as which course you are pursuing. कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MA इंग्लिश, MCOM कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी. और वहां पे जो उस कोर्स में विषय है, जो सब्जेक्ट्स हैं, MCOM की अगर हम लोग बात करते हैं तो MCOM में जो बहुत सारे विषय होते हैं हमारे यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, इनकम टैक्स है, कॉस्टिंग है, स्टैटिस्टिक्स है. तो वो जो विषय हैं उसको हम लोग अपने सिस्टम में बोलते हैं कोर्स. दे आर ऑल कॉल्ड कोर्स. एंड इन एवरी कोर्स you will have specified number of study material which come in the form of the small booklets which we call as block. ये ब्लॉक वही है जो हर कोर्स के लिए आपको दिए जाते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो डिजिटाइज फॉर्मेट में जिन्होंने एक्सेस कर लिया है, जिन्होंने ले लिया है, वो उसको देख करके, अपना पढ़ करके, उसको समझ करके अपना आगे बढ़ते रहें, जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो. तो हर कोर्स के लिए कुछ आपको ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसको कि हम अपने ओडीएल सिस्टम में बोलते हैं यूनिट्स. एवरी यूनिट और इन कॉमन पार्लेंस इफ वी टॉक अबाउट जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया गया है जिससे कि स्टूडेंट को राइट फ्रॉम द वर्ड गो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली. इट स्टार्ट्स विद द ब्रॉड स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, then along with that introduction about the subject, then different sections, different terminologies, and different parts the whole chapter is divided into, or the whole unit is divided into. Then summary is given. Then we also refer to certain difficult terminologies which are there. So all those things have been given. This is the broad structure. And the opening para of every unit, in every block, in every course, would be that after having read this particular unit, you should be able to understand points 1, 2, 3, 4, 5, 6. You'll be able to give an understanding about the subject which is being discussed, the different terminologies, the different aspects of the subject, everything, whatever is being discussed. It will be conveyed in a very clear and distinctive format. So this is how it begins, and then it moves from one section to another, then to third section, and in between every section there is an exercise what we call as the check your progress. Check your progress की एक exercise होती है जो कि पिछले कुछ पेजेस में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको आप समझ गए कि नहीं, वहां पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर उनका जवाब आप दे सकते हैं ध्यान से और अच्छे से, तो then you can have the confidence that yes, you are able to understand the content well and you can proceed further. But if you think that you have not been able to give answer to the questions, because those questions are to be answered by you, your own self. That is why the headline of that particular question is, or the box is, check your progress. आपने कितना समझा उसकी प्रोग्रेस को, अगर आप उन सवालों का जवाब दे पाते हैं तो you can proceed further reading, going to next section or within the same section next subsection, और इस तरह से आप उसको एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ऐसे आप आगे कर सकते हैं. और लास्ट में एक समरी दी गई है जैसे मैंने आपको बताया, और समरी के बाद में जो नए शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, नए टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है, उसका मीनिंग भी दिया गया है.
and the unit or the chapter ends with unit end questions. Those questions are taken from the content of the subject matter which has been discussed in that यूनिट, और वो आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, and try to attempt every question that will help you to understand and grasp not only the subject matter, but you will also have a feel the way in which the questions could be asked in the examination. This is something which is very important. और वो जो है आप उसको धीरे 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 करके आप ऐसे एक यूनिट से दूसरा यूनिट, दूसरा यूनिट से तीसरा यूनिट, ऐसे करके ऑन एन एवरेज एक ब्लॉक में करीब 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोग्राम ऑफ स्टडी, डिपेंडिंग अपॉन दी कोर्स, वो आपको उसमें दिया रहा है. एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी को बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि असाइनमेंट एक हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल कंपोनेंट है टोटल प्रोग्राम पैकेज का. हर कोर्स के लिए हर स्टूडेंट को एक असाइनमेंट सबमिट करना है. ऑफ कोर्स टू द ऑनलाइन लर्नर्स इट विल बी डन ऑनलाइन एट द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और स्टडी सेंटर में जहां पे भी आपको अटैच किया गया है उस स्टडी सेंटर पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी. और ये सारी जानकारी हम लोग अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और उसको समय समय पे अपडेट भी करते रहते हैं. सो मेक ए हैबिट ऑफ रेगुलरली विजिटिंग दी आरसी वेबसाइट. उसमें स्टूडेंट जोन में आप जाइए और वहां पे बहुत सारी चीजें आपके काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बताया गया, आपके असाइनमेंट सबमिशन के बारे में बताया गया है, आपके कंडक्ट ऑफ वेरियस रेडियो प्रोग्राम्स एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम्स, वो सारे शेड्यूल के बारे में बताया गया है. तो ये सब कुछ इस ढंग से दिया है जहां पे कि आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर सकते हैं. What is important about the assignment besides submission? That there are certain fixed deadlines within which the assignments are to be submitted. And please remember, every assignment carries a weightage of 30%. सभी विद्यार्थियों का जो असाइनमेंट है उसका वेटेज 30% है, और ये 30% का जो असाइनमेंट का वेटेज है वो आपके टोटल वेटेज का पार्ट है, which otherwise implies that sitting at home in the comfort of your home, you can go through the study material, you can make the go through the assignments, you can prepare the assignment in terms of writing the responses, and of course submit it at the desired and specified link where it is to be submitted. 2-3 things which are important to be taken care of as though you are a student of online learning, but try to do it in your own handwriting. Please do not key type ना करें उसको, आप अपनी हैंडराइटिंग में असाइनमेंट सबमिट करें और अपने शब्दों में उसको लिखें. You consult the study material. Consulting the study material is more than enough. If you want to refer to any other text, of course you can do it. But my suggestion would be that whatever you do, whether you go through the study material, you refer to the other reading material, but when you are writing the assignment, please make it a point that you do it in your own handwriting and in your own words. अपने शब्दों को आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करिए और बिल्कुल भी टेक्स्ट को कॉपी ना करें. टीचर्स को, एकेडमिक काउंसलर्स को ये स्टैंडिंग गाइडलाइंस हम लोगों ने दी हुई है कि wherever they find that the assignments have been copied, they are liable to be deducted or marked deductions. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा जहां पे कि मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन कॉपी करने के साथ आपके नंबर कम हो जाएं. फिर बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि मैंने ऐसे किया या इस ढंग से किया और मेरे नंबर कम आए, जबकि ऑलमोस्ट ऐसा ही किसी और ने किया था तो उसके नंबर हमसे अच्छे आए. सो इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, बट डू नॉट कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द स्टडी मटेरियल. Try and do not copy from one another.
ऑनलाइन में ये संभावनाएं कम होती हैं वन अनदर वाली, बट स्टिल गिवन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वेरियस सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि बहुत सारे छात्र एक दूसरे से बहुत आसानी से, व्हाट्सएप है, जुड़ जाते हैं। जुड़िए जरूर, लेकिन काम अपना करिए, स्वयं का काम करिए। डू नॉट शेयर विद एनीवन। So, and submission of assignment is one of the prerequisites for successful completion of your program. You cannot take your term and examination unless and until you have completed your basic requirement of assignment submission. Theory examination में भी तभी आप बैठ पाइएगा जब आपका assignment submission complete है. So this was media number one, what we call as the print material or the digitized format. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए या होगा कि इसमें यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से फैसिलिटेट किया है in terms of providing the digitized format of the study material. You are enrolled or not, you are pursuing any study or not, you can have an access to IGNOU study material on the e-ज्ञानकोश लिंक ऑफ इग्नू। इग्नू के जो मेन वेबसाइट है उसके होम पेज पे ही ई ज्ञानकोश का लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए और उसमें सारे स्टडी मटेरियल, नॉट ओनली द प्रोग्राम व्हिच यू आर परस्यूइंग बट मोर देन 240 ऑड प्रोग्राम्स, उनके स्टडी मटेरियल आर अपलोडेड। आपको उसको डाउनलोड करना है या अगर लिंक आपको सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आया है, आप उसके थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन रीड इट, रीड इट, रीड इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल you are confident that yes, you have been able to understand the content of the subject matter. So this is about the first media, what we call as the study material in the form of the digitized format and also printed format for those who are in the UDL system. Second mode is the teaching, what we call as the academic counseling or counseling support to the learners. I've been repeatedly saying that it is an online program, so obviously your teaching support and counseling support would be provided to you in online mode. जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका विषय है, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, उसके अनुरूप आपको काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल आप लोगों का अपलोड होगा हमारे वेबसाइट पे इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 www.rcdelhi3@ignou.ac.in. Please visit this website regularly for various updates, including the update about the counseling schedule for your program of study. ऑनलाइन प्रोग्राम्स होंगे, इनवेरिएबली वो सैटरडे संडेज को होंगे। जो भी शेड्यूल में समय है आप उसको जरूर अटेंड करें। वहां पे टीचर्स आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके जो सेशंस होंगे फॉर एवरी कोर्स, फॉर एवरी सब्जेक्ट, दे वुड बी लिमिटेड इन नंबर। एंड लिमिटेड इन नंबर का मतलब है कि अनलाइक द कन्वेंशनल मोड जहाँ पे कि एक विषय के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 16 सेशन, 18 सेशन, 20 सेशन, depending upon the course and the program of study which you are pursuing there, these sessions are organized. In online mode, हमारे number of sessions वो restricted होंगे on the basis of the credit weightage assigned to each of the program, and that credit becomes the basis for the identifying and giving the specified number of counseling session support, teaching support. I'll just take a small detour here. आपको ये क्रेडिट टर्मिनोलॉजी के बारे में बताने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब वो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे, उन्होंने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस को रेफर किया होगा इग्नू का, तो सभी ने वहां पे देखा होगा एक शब्द का इस्तेमाल, एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है हर प्रोग्राम के साथ। कोई बैचलर लेवल का प्रोग्राम है, वहां पे
so many credits are to be completed. It could be 132, it could be 144, it could be 96, it could be 72, depending upon it could be 30 or 32 credits, it could be 16 credits. उसके बारे में वहां लिखा गया है, और ये टोटल क्रेडिट को फिर कोर्स वाइज सेग्रीगेट कर दिया है. कोई 4 कोर्स का क्रेडिट है, कोई 6 क्रेडिट का कोर्स है. तो इस तरह से इसमें जो बताया गया है उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए. आई गो ए स्टेप फर्दर. देन व्हाट एग्जैक्टली इज क्रेडिट? Credit in IGNU system is nothing but the number of study hours which every learner has to put in. कितना समय आप स्वाध्याय में, आप काउंसलिंग अटेंड करने में, आप असाइनमेंट सबमिशन में, जितने भी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं वो आप करेंगे, वो आपको उस क्रेडिट के माध्यम से पता चल जाएगा. इग्नू सिस्टम के हिसाब से, एज पर द इग्नू सिस्टम, 1 credit is equivalent to 30 hours of study. तो 30 घंटे की स्टडी जो है बराबर 1 क्रेडिट. और अगर कोई कोर्स मान लीजिए 4 क्रेडिट का है, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू हैव टू पुट इन एज ए लर्नर 120 hours. 30 multiplied by 4 credits. 30 hours for 1 credit, 4 credits आते हैं, तो 30 multiplied by 4 credits. 120 hours of study would be required as the input from your side. और वो इनपुट जो है आपको देना ही पड़ेगा. आप उसको दीजिए, जरूर दीजिए. अपने जो भी एक्टिविटीज है, whether your job, your employment, your family, your profession to which you are engaged, everything is to be planned in such a manner that you are able to devote some specified time on a regular basis to pursue your studies. अब इसको कैसे हम लोग लिंक करेंगे for with the number of counseling session? वो 10% of the total academic counseling session जो होंगे, या टोटल का जो होगा, वो 10% of the total credit hours का आपको काउंसलिंग सपोर्ट के फॉर्म में मिलेगा. और 10% क्या हुआ? मान लीजिए जो विषय या कोई कोर्स है जो 4 क्रेडिट का है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स आपके हो गए 120. तो 120 आवर्स का 10% हो गया 12. 2 घंटे का ऑन एन एवरेज हमारे सेशन होंगे, तो 6 सेशन आपके उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मिलेंगे. Naturally, the whole course cannot be completed in 6 sessions. That is why it is expected of all the learners, जो भी हम लोगों के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, जो इसको देख रहे हैं कार्यक्रमों को, इस कार्यक्रम को, उनको ये समझना होगा कि इतना मिनिमम इनपुट उनको देना पड़ेगा. और वो क्या होगा इनपुट? कि जब 6 सेशन होंगे तो कम प्रिपेयर्ड इन द क्लासरूम सिचुएशन. ऐसे ही 6 क्रेडिट का कोर्स होगा, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स उसमें निकल के आ जाता है वो 180 घंटे. 18 घंटे हो गए, तो 6 क्रेडिट का 6 से 8 सेशन होगा. तो ऑन एन एवरेज 4 क्रेडिट के कोर्स के लिए 4 से 6 सेशन होंगे आपके. 6 क्रेडिट कोर्स के लिए आपके 6 से 8 सेशन होंगे. कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो 8 क्रेडिट्स के भी होंगे कोर्सेज जिसमें, तो वो जो है उसके अंदर उनको 8 से 10 सेशन देने होंगे. तो उसमें आपको ये उतना, जब आप क्लास अटेंड करिएगा तो टीचर, जैसे अभी हम बोल रहे हैं वैसे क्लासरूम में टीचर आपको एड्रेस करेगा, आपके एकेडमिक कंटेंट के बारे में बताएगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली यू कैन कम फॉरवर्ड, इंक्वायर अबाउट इट. बट इफ यू डू नॉट हैव द प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली यू कैन प्रोसीड विद योर ओन सेल्फ स्टडी. बट इनवेरिएबली ऐसा होता नहीं है. स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम तभी होती है जब कोई भी स्टूडेंट तैयार होके आता है. So that is why we urge upon each and every learner to come prepared in the online counseling sessions. आपकी जो जो डिफिकल्टीज हैं आप पढ़िएगा. जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है जो डिजिटाइज फॉर्मेट में है, आप उसको पढ़िए.
समझिए, नॉट एवरीथिंग कुड बी अंडरस्टूड इन वन। ट्राई टू रीड इट, रीड इट, रीड इट मल्टीपल टाइम्स। जब तक आप नहीं पढ़िएगा आपको वो चीजें क्लियर नहीं। एंड इफ यू आर एबल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, देन अकॉर्डिंगली आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा एट द डेजिग्नेटेड लिंक ऑफ द स्टडी सेंटर टू विच यू आर अटैच्ड। और वो जो डेजिग्नेटेड लिंक है उसके अंदर आपको ये करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन जो असाइनमेंट सबमिशन का शेड्यूल है उसको जरूर आप लोग फॉलो करें। और अभी जो सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका असाइनमेंट सबमिशन का डेट, ऑफ कोर्स टुडे हैपेंस टू बी द लास्ट डेट, बट मेनी ऑफ यू वुड से दैट सर हमें तो अभी तक हुआ नहीं, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? In all probability, we'll extend the dates for these learners. But for all bachelor's, diploma, and master degree students, their assignment submission would take place sometimes in the month of September, October 2022. आपको असाइनमेंट उस समय सबमिट करना है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की परीक्षा जो है वो जून में होगी, लेकिन जून में परीक्षा अभी नहीं होगी। मे बी वो थोड़ा सा डिले हो ऑन अकाउंट ऑफ दी कोविड फैक्टर, बट बी प्रिपेयर्ड। जितने भी सर्टिफिकेट लेवल के स्टूडेंट्स हैं आप लोग तैयारी करते रहें और परीक्षा जो है उसके लिए आप अपना वो हो। और कैसे परीक्षा देनी होगी, कब परीक्षा देनी होगी, उसकी गाइडलाइन भी आप लोगों को पूरी दी जाएगी। इसमें जो जनरल सपोर्ट है, एकेडमिक सपोर्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड सपोर्ट है, वो टीचर्स देंगे। कुछ एकेडमिक और प्रोसीजर रिलेटेड सपोर्ट है रीजनल सेंटर देगा, और कुछ आपको सपोर्ट सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी मिलेगा। सो प्लीज टेक नोट ऑफ दीज फैक्टर्स व्हेन एंड हाउ एंड वेयर you have to attend the counseling session, you have to submit your assignments, you have to submit your dissertation if at all the program includes dissertation work or some kind of a workbook or some kind of a project. It varies from program to program. तो ये जो आपको 10% का वो दिया गया है मार्जिन, वो केवल और केवल इसलिए दिया गया है that you devote more time on your self study. स्टडी मटेरियल दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। Even then also, if you feel that you're not able to understand, obviously you can always seek clarification and guidance from the teacher in the online sessions whenever they are conducted. आप उनसे पूछिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए, और वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे आपको अपना ये डिफिकल्टी रिजॉल्व कर सकते हैं। That is why regularity and punctuality in terms of attending the counseling sessions is a must, and that will go a long way in facilitating you and your own self in the completion of the program. So please follow these guidelines, and I'm sure that आपके जितने भी problems हैं, constraints हैं, most of them would get resolved. Electronic media का हम लोग बहुत, this is what is the third medium, what we call as electronic media is being extensively utilized. जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे कुछ जो स्टडी मटेरियल हैं, हमारे जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, जो हमारा वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, धीरे धीरे सब डिजिटाइज्ड हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कार्यक्रम का सपोर्ट हम इग्नू के ब्रॉडकास्ट मीडिया, जो ज्ञानवाणी का एफएम रेडियो स्टेशन है, उसके माध्यम से, इग्नू का ज्ञान दर्शन एक चैनल है जो इग्नू प्रसार भारती और यूजीसी के माध्यम से ये बनाया गया है, और उसमें केवल और केवल शिक्षा संबंधित शैक्षिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर बीइंग टेलीकास्ट। उसका शेड्यूल भी हमारा वेबसाइट पे अपलोडेड है, इग्नू की वेबसाइट पे अपलोडेड है। आप उसको रेगुलरली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम, 281 कार्यक्रमों का मैंने जिक्र किया था शुरू में, हम लोग केवल इस समय 8
प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं फॉर एकेडमिक सपोर्ट. सो व्हेनेवर यू हैव प्रॉब्लम्स, प्लीज गो थ्रू and surely try to attend these sessions of Gyanvani, the FM radio station of Indira Gandhi National Open University, ज्ञान दर्शन, एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट जिसमें लाइव सेशन हमारे होते हैं, और दोनों में हम लोग आप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप उसको ऑफलाइन इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन के माध्यम से भी देख सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भी देख सकते हैं, और उसमें टेलीफोन करके आप जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट स्टूडियोज में हैं, चाहे वो रेडियो प्रोग्राम हो, चाहे वो टेलीविजन का प्रोग्राम हो, आप उनसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं. उसके साथ साथ में हमारी अपनी फैकल्टी जो डिफरेंट प्रोग्राम्स की हैं, डिफरेंट कोर्सेज के जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग भी काउंसलिंग करते हैं, जिसमें अधिकतर हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आज का कार्यक्रम का प्रसारण हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, ऐसे ही विश्वविद्यालय के बहुत सारे कार्यक्रमों का प्रसारण, इंक्लूडिंग द काउंसलिंग सेशन टू बी टेकन बाय द कंसर्न फैकल्टी मेंबर, इज डन ऑनलाइन थ्रू फेसबुक लाइव सेशन, यूट्यूब लाइव सेशन, एंड ऑफ कोर्स एज टू द रिक्वायरमेंट वो कंप्यूटर मीडिएटेड भी होता है, जिसको कि ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन के साथ साथ जो कंप्यूटर मीडिएटेड सपोर्ट है उसको हम बोलते हैं ज्ञान धारा. ये कंप्यूटर एडेड एंड सपोर्टेड सपोर्ट मैकेनिज्म है, जो कंप्यूटर के माध्यम से आपको, कंप्यूटर इज नथिंग बट व्हाट वी टॉक अबाउट द लैपटॉप, वी टॉक अबाउट मोबाइल, वी टॉक अबाउट all type of support which is being provided to the learners on matters related to both academic and things which are not academic in nature, procedure related है, administrative related है, उसका भी समाधान हम लोग वहां पे वो करते हैं. तो ये जो डिफरेंट मीडिया है, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर मीडिएटेड ज्ञानधारा हो गया, सोशल मीडिया जिसमें आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, और माध्यम का इस्तेमाल जो हो रहा है, ये सबका जो उद्देश्य है, the purpose is that all these are giving you the required input for successfully understanding the content, or successfully having the conceptualization, conceptual clarity about it, and जो उसको बार बार हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी और मिलती जाएगी. Again, I say, responsibility lies on you as a learner. Please make sure that you put in your best effort. चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे हमारा प्लेटफॉर्म हो, गूगल लिंक हो, जूम हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. उस पर टीचर्स नॉर्मली गूगल का ही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, बट इट कुड बी एनी अदर प्लेटफॉर्म. और जो भी सेशन होगा, जब भी सेशन होगा, वो प्लेटफॉर्म का जिक्र होगा, वो पर्टिकुलर लिंक दिया रहेगा जहां पे कि आप क्लासरूम को एक्सेस कर सकते हैं, एंड यू कैन लिसन टू द प्रोग्राम एंड इंटरैक्ट विद द टीचर एंड help your own self in understanding the content of the subject matter. And the fourth media, of course, it talks about the project work or dissertation or workbook or practical component. इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं है, जैसे बीसी का है, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, कुछ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स हैं, स्कूल ऑफ साइंसेस के प्रोग्राम है, जहाँ प्रैक्टिकल्स भी होंगे. उसमें ऑनलाइन प्रैक्टिकल किस प्रकार से होंगे, ऑफ कोर्स none of you is related to that particular aspect, but you should have an understanding as to what way the practical is to be conducted. Even that also is elaborated upon. So ये सारे जो माध्यम हैं जिनका मैंने जिक्र किया, आपका स्टडी मटेरियल digitized or printed, the counseling support to the teachers, the use of electronic media in the form of the not only broadcast and telecast, but also computer mediated.
वो सब में हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी जानकारी अच्छे से अच्छे दें और आप उसको समझ सकें और कर सकें। ये जब आप करिएगा तो you'll find that you are able to have a good grasp over the subject. Please remember, nothing will be easy. Simply taking admission is not going to resolve your problem unless and until you put in required effort. And what is that required effort? I have already told you through the credit terminology that for certificate program, if it is worth about 16 odd credits, so 16 credit multiplied by 30, that makes 480 hours of study. इतना आपको टाइम देना है, and if you have not yet started studying, my guidance and suggestion to each one of you would be that please start reading it. And right in the beginning itself, when I complimented each one of you for taking admission to the program of study to which you are enrolled, this compliment is not only for taking admission, but also complimenting your initiative to improve your academic qualification, your professional competencies, your skills, and simultaneously the responsibility which you have taken for your own self for the desired improvement. वो उसका compliment. And along with the responsibility comes a lot of effort which each one of you has to put in to ensure and to get the best results. Let me tell you to each one of you that entry into the IGNOU system is very easy and convenient. I'm not trying to discourage anyone, but I'm trying to put in a fact that it is a rigorous process, at times even more rigorous as compared to the institutions which are doing in face-to-face. बहुत rigorous process होता है, बहुत सारी activities होती हैं और उसको आपको पूरा करना, और ये एक बार आप करेंगे, so you'll be able to do it. Please understand one basic thing, that आपका जो ऑनलाइन है प्रोग्राम, वो वही प्रोग्राम है जो ओडीएल सिस्टम के माध्यम से दिया गया है। ओडीएल सिस्टम में और ऑनलाइन में क्या अंतर है? ओडीएल सिस्टम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, ऑनलाइन में आपको बिल्कुल भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं रहेगा। टीचर रहेंगे बट वो वर्चुअली आपसे मीट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी ओडीएल सिस्टम के स्टूडेंट्स को है, एग्जैक्टली वही फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने ऑनलाइन लर्नर्स को भी देते हैं, whether it is in regard to the admission process, in regard to the pre-entry qualification requirement, in regard to the pre-entry percentage bar, in regard to the pre-entry age bar, etc., etc. ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं रखते हैं। ये केवल और केवल आपको इस ढंग से बताते हैं so that you are able to understand things in right perspective. और यहीं पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अपने न्यूली एडमिटेड लर्नर्स को कि जो हमारे विश्वविद्यालय की जो फिलॉसफी है वो है ऑनलाइन या लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या होता है कि कोई एक विशेष आयु, कोई एक विशेष स्टेटस नहीं होता है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, it is a continuous process which each one of us has to understand, which each one of us has to go through and complete the requirements or fulfill the requirements of the program as it is prescribed in the study material. आप लोगों को स्टडी मटेरियल के साथ साथ एक प्रोग्राम गाइड भी मिला होगा, आप उसको पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें and start reading from today itself, so that you are able to fulfill and complete all the requirements as per the requirement of the. So these few words, of course, I once again welcome all of you, and my heartiest congratulations to each one of you for having taken admission
and also for the fact that it is not only restricted to admission alone or limited to admission alone, but also it speaks volumes about a very high degree of motivation, a very high degree of commitment on your part, your perseverance to improve your academic qualification, to improve your professional competencies and skills. Let me assure you on my behalf, on behalf of my colleagues of the regional center, on behalf of our teachers and faculty of the study centers associated with us, that the support to you would be amongst the best support in the system. But still, major responsibility lies on you as a learner. It lies on you as a student of this mega university system, and that initiative has to be from both sides. That has to be forthcoming. That should be there so that you are not faltering at any point in time. So, all my best wishes. I would request my colleagues if they want to share anything or they want to say anything, particularly those who are from our study centers. We have basically the students would be allocated to 3 different study centers. One is Delhi Library Association, the other one is Bharati College, and the third one would be your regional center study center. So we have coordinators and program in charges from them. If they want to share anything, I would request them to say one by one. ज्ञानेंद्र जी अगर हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। आपने बहुत डिटेल्स में जो है बच्चों को बता दिया है सर। जो मेरा यही रिक्वेस्ट है, तैयारी करके आते नहीं, ये बात को समझ में आती नहीं और बाद में पूछते हैं। आपने इतने अच्छे डिटेल्स में बता दिया है, तो बच्चों की रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कम से कम अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ के आए, को समझने में आसानी होगी और क्वेश्चंस जो नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन तो काउंसलर से पूछें। सारे काउंसलर एक से एक दिग्गज है, वो आपके प्रश्नों का सही उत्तर करेंगे। बस थैंक यू सर। थैंक यू ब्रजेश जी, डॉक्टर रचना मोहन हैं? अगर नहीं तो ब्रजेश जी कुछ बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को जो आरसी दिल्ली 3 पे अटैच होंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एकता मैम, फैजल सर, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हम सारे अपने स्टूडेंट्स को वेलकम करेंगे अपने स्टडी सेंटर में, एंड वी आर हियर टू गिव बेस्ट सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट, दिस गाइडलाइन टू इम्प्रूव देयर स्टडी। तो I'd always encourage our students to maintain discipline, maintain best study, so that they can get best result. I am here. We are not only for teaching. We can encourage them for their personal career too, if they need it. So, बाकी जितने भी required details थे, सर ने आप लोगों को सबको समझाया। स्टडी सेंटर से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सब कुछ सर ने बताया। और मैं सारे स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज विजिट द IGNOU website as well as RC website regularly, so that each and every types of information can be gathered by them and all the gapping should be removed. बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, कभी कहते हैं लिंक नहीं पता चल रहा है असाइनमेंट का, कभी कुछ। तो अगर आप सभी डेली एक बार 2 मिनट का टाइम निकालकर स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर एंड IGNOU की वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे तो ये सारी गैपिंग दूर हो जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वी आर हियर टू सपोर्ट यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रजेश जी। भारती कॉलेज से कौन है? गुड आफ्टरनून सर, मैं नागेंद्र कुमार भारती कॉलेज से हूँ सर। हाँ बताएं नागेंद्र जी। हाँ सर, हमने क्लासेस जो है 15 मई से स्टार्ट किया है सर, जो है करने वाले हैं सर जो है, और हम लोग अप्रूवल के लिए टाइम टेबल जल्दी ही भेज देंगे। और दूसरी बात है सर कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस बार हमने मेल भी भिजवा रहे हैं सर अपनी तरफ से, जो है कि सभी बच्चों के पास मेल चला जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट कर सके हमारे क्लासेस में जो है। और पिछले बार भी सर ऑल ओवर इंडिया से बच्चों ने अटेंड किया था हमारी क्लासेस को जो है, और बहुत ही रिगरस हमारी क्लासेस होती है।
और दूसरी एक और बात है सर कि हम लोगों ने एक इग्नू सेंटर भारती कॉलेज का वेबसाइट भी डेवलप किया है सर जो है, ताकि बच्चे वहाँ पर भी जाकर जो है और हमारी एक्टिविटी जो भी है उसमें जी पार्टिसिपेट कर सके। और तीसरी बात है सर कि हम लोग जो है कुछ ऐसे एक्टिविटी भी कराते हैं सर जो रेगुलर के बच्चे करते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए इलेक्शन सर्वे हम लोग करवाते हैं सर जो है, उसमें वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं जो है एक्टिवली सर जो है, उन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मिल सकता है जो है कि ग्राउंड रियलिटी का, कि कैसे लोग वोटिंग पैटर्न्स कैसे बिहेव करते हैं। तो कई तरह की एक्टिविटी सर अपने सेंटर में कराते हैं और बच्चे अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, तो ये देश के लिए, कंट्री के लिए भी अच्छा है सर कि एक सिस्टम डेवलप होगा और हमारी इग्नू के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी डेवलप होगी सर। थैंक यू वंडरफुल। सर। इसमें बस यही है कि नागेंद्र जी, हाँ जी। एम इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, यस सर, यस सर। 406 स्टूडेंट्स हैं, और ये हाँ थोड़ा जी। सा इसमें प्रोएक्टिवली हाँ। करना है। एक मिनट। या शोभना सिन्हा जी, यू वांट टू से समथिंग? Sorry, sir. I think Nagend has already conveyed what the part. We just wanted to wish all the students, just to welcome all the students. अच्छा सर, एक बात और नोटिस में लाना चाह रहा था सर कि इंग्लिश में सर जो है लास्ट ईयर भी 100 से ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं सर जो है अटेंड करने वाले, तो सभी को अटेंड नहीं, जो ज्वाइन नहीं करा पाते हैं सर जो है, तो इसके उसका लिए क्या? मैं अलग से आप लोगों से चर्चा करूंगा, यस और सर। इसके लिए आप लोगों को खास करके जहाँ पे एनरोलमेंट ज्यादा है, यस सर। प्लान आपको लेना पड़ेगा, Yes, जहाँ sir. पे नंबर थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। Yes, sir. तो डॉक्टर फैजल और डॉक्टर एकता से आप कांटेक्ट करिएगा, ये आप लोगों को गाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ जो हमारा अपना रीजनल सेंटर का स्टडी सेंटर है, वहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेशल प्लान लिया है, ये Yes, sir. को मैं बताऊंगा। Yes, sir. शेयर करेंगे आपको। ठीक है, ठीक है। Approval for that, and once we approve it, you go ahead with that plan. And Okay, okay, sir. be able to accommodate a bigger number of the learners. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. Right. Thank you. Dr. Ekta. Yes, sir. My only advice to learners is that now their most important role is to manage their time for pursuing their program of study if they want to complete within the prescribed time limit. This will help them a lot, and we are there to give all the required academic support services to our learners. And if they have any query, they are free to write to us. Thank you. Thank you. Dr. Fazal. Namaskar. Namaskar. On behalf of the regional center, welcome all the new learners online for online programs. I suggest each and every learner to complete their program in time, as Dr. Ekta Sharma suggested. I was watching the comments of the learners on Facebook. Their most concern is that what is the mode of the examination? I mean, it will be online or offline. But we are yet to decide what will be the mode. जो भी इसमें फाइनल कॉल होगा वो बता दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो ऑनलाइन रखा जाएगा या ऑफलाइन होगा, वो मेथोडोलॉजी जैसे ही क्लियर होगी वो सभी स्टूडेंट्स को इग्नू की वेबसाइट पे, सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन के लिंक पे और रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे ये चीजें बड़े क्लियर टर्म्स पे हम लोग अपलोड करेंगे। अभी एक्सेप्ट फॉर द सर्टिफिकेट प्रोग्राम स्टूडेंट्स जिनकी परीक्षा इज ड्यू मे बी समटाइम्स इन द मंथ ऑफ second half of June, or it could be July, depending upon the COVID situation. Examination tabhi sambhav hoga. We still have time, so let them not worry about the examination as of now. Let them focus on this. But yes, I would like to reassure all the learners. Whatever platform, whether it is online platform or offline platform, it will be communicated to the learners well in advance. इसके अलावा और कुछ? डॉक्टर फैजल। ख्याल से उनका कुछ लिंक का प्रॉब्लम है। डॉक्टर फैजल, आर यू एबल टू हियर मी? देयर इज सम इंटरनेट। उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन मात्र के लिए। जी
उनका दूसरा क्वेश्चन था सर कि असाइनमेंट जो है वो उनको जमा करना है, कब जमा करना है, और लिंक उसका जो ऑनलाइन अगर जमा करना है तो ऑनलाइन लिंक बिल्कुल, ये एक सेपरेट लिंक हम लोग करवाएंगे और ये सभी सेंटर्स, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी हमारे स्टडी सेंटर को ये स्टूडेंट एलोकेशन होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जो असाइनमेंट सबमिशन का जो लिंक है फॉर वेरियस कोर्सेज, I would request all the study center coordinators to please create a separate link for these online learners. दो सब कुछ वही है, लेकिन वो एक सेपरेट लिंक होगा, तो ये स्टूडेंट्स का जो कि नंबर है, दैट इज नॉट ए वेरी लार्ज नंबर, सो लेट दिस नॉट बी मिक्स्ड विद द जनरल स्टूडेंट्स। उसका वो जैसे भी हो, वो ऑनलाइन में एक सेपरेट लिंक दे दें और उसमें जो भी प्रोग्राम है फॉर ऑनलाइन लर्नर्स, हर स्टडी सेंटर पे कुछ ही प्रोग्राम है। लाइब्रेरी साइंसेज माने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में देयर आर अबाउट 2 प्रोग्राम्स। सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स हमारे रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर में है, तो एक अलग लिंक ही क्रिएट करना पड़ेगा हमें, जहां पे ऑनलाइन लर्नर्स के लिए देना होगा प्रोग्राम वाइज। जैसे हमारे रीजनल सेंटर में है तो बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज है, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ट्रांसलेशन स्टडीज है। ये जो प्रोग्राम है उनका एक अलग लिंक हम लोग क्रिएट कराएंगे और देखते हैं, लेट अस सी व्हाट वे इट वर्क्स आउट। सो इज द केस विद स्टूडेंट्स ऑफ भारती कॉलेज, दोज हु आर एलोकेटेड टू भारती कॉलेज। अगर वो साथ में करें, नथिंग लाइक इट, सेपरेट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा in terms of the number of students, those who are attached is 406. 406 में इंग्लिश में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है फॉर जनवरी 2022 सेशन। तो वो कैसे करें उसके बारे में हम चर्चा करके, बट वेरी शॉर्टली इट विल गेट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, और इसके बारे में एक जनरल सर्कुलर भी हम लोग अपलोड कर देंगे अपने वेबसाइट पे, अपने फेसबुक पेज पे। और स्टूडेंट को हमारी यही एडवाइस है, फिर से इसको हम दोहराएंगे, कि रेगुलरली विजिट दी वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वेबसाइट ऑफ द रीजनल सेंटर एंड ऑल्सो द फेसबुक ऑफ द रीजनल सेंटर। जो डिफरेंट अपडेट्स हैं वो हम लोग लगातार अपना फेसबुक पे और ट्विटर पे भी डालते हैं। तो रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का ट्विटर हैंडल है, रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का फेसबुक पेज है, उसको रेगुलरली वो लोग विजिट करें और देखते रहें डिफरेंट अपडेट्स को। जब तक परीक्षा पास नहीं आ रही है, जब तक परीक्षा देना नहीं है, उसके लिए परेशान ना हो, और जो चीज सामने है, आपको स्टडी मटेरियल मिल गया है, सॉफ्ट कॉपी मिल गई है, यू स्टार्ट रीडिंग इट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इफ यू वांट टू हैव एन आइडिया एज टू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो स्टूडेंट जोन में, इग्नू के स्टूडेंट जोन में या हमारे स्टूडेंट जोन में क्लिक करिएगा तो डाउनलोड्स के लिंक पे आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो जो जिस सत्र के लिए रेलेवेंट है व्हेन इट कम्स टू द असाइनमेंट, या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट कोर्सेज, उसको देख करके आप समझ सकते हैं, यू गेट एन आइडिया एज टू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड एंड हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू prepare themselves, gear up themselves. That is something which is very important. और बताएं इसके अलावा कुछ। स्टडी मटेरियल का सर कंसर्न था कि स्टडी मटेरियल तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए तो डाउनलोड करना है ज्ञान कोश से। बिल्कुल, वही एकमात्र जरिया है ऑनलाइन का, डिजिटाइज्ड फॉर्मेट, ई ज्ञान कोश लिंक से उनको डाउनलोड करना है। और अगर नहीं किया है अभी तक, so my suggestion would be that please download it right now. एक कम्युनिकेशन हम लोग एक सेपरेट भिजवाएंगे और उसके लिए स्टूडेंट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? ठीक है सर, बस यही था। So thank you all, and of course once again I not only welcome all the newly admitted learners, but also my colleagues from the study centers, from the regional center,
And all my best wishes to all the newly admitted learners of the online program for the program of study to which they have enrolled themselves, they have taken admission, for all their best academic performances, for all their best academic pursuits, and of course, all their future endeavors. So thank you all once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.